जो हम लोगों का ज़िंदगी है ज़मीन से ही आधारित है सर। यहाँ अगर ज़मीन नहीं है तो उनका जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। और क्या है कि जैसे पानी नहीं मिल पाया है तो ज़मीन खाली पड़ा रह जाता है। खेती भी होती है तो वर्षा छोड़ देती है, कोई है सिंचाई है तो कोई सींच लेते हैं, नहीं सूख जाती है। अब घर से कहाँ जाएं? अब तो जंगल नहीं रही जीविका का सहारा, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुके। वो कंदमूल अब नहीं मिलता है। Climate change is real, it's already upon us. See, quite often when we talk about climate change and talk about 2100 as the year, people begin to think 2100 is too far away. India has made rather generous commitments on climate, to reach net zero by 2070 and a number of other targets for 2030. Achieving these climate targets will mean competing demands on land. Landscape restoration is something which we thought can play a very vital role, which was the outcome of intensive discussion with stakeholders. We need to understand what the villagers want and what will sustain their interest. There is no sustainable development unless the interest of the people who are going to benefit is also sustained. In the initial years, we focused a lot on the assessment to bring together these different stakeholders and have a common vision, or what we call as a shared understanding of what landscape restoration. National level, we started with developing what could be potential pathways if a restoration has to be implemented in India. So we launched the Restoration Opportunities Atlas in 2018. If we have to actually plan implementation of restoration, it needs more action and planning at subnational level. ROAM is a global tool developed by WRI and IUCN. We adapted it for the Indian context, taking into consideration governance issues which are very key when we think about restoration. Thinking through in terms of livelihood issues, thinking about multiple ecosystem services that are important when we have to plan for restoration. And one of the examples we've taken up is in the Sidhi District in Madhya Pradesh. We're trying to approach this through a very systematic way of restoring lands there and making sure that precious land is taken care of. तो लैंड रेस्टोरेशन और वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट यहाँ बहुत आवश्यक है। बहुत सारा ऐसा लैंड यहाँ पर पड़ा हुआ है या फॉरेस्ट कवर्ड लैंड है, और जो लोग हैं यहाँ के उनको उन रिसोर्सेज को यूज़ करके और अपनी पारिवारिक स्थिति उसको बेहतर करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ के लोगों को। तो यहाँ की 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो लैंड डिग्रेडेशन से इम्पैक्ट हो सकता है। उनका लाइवलीहुड डायरेक्टली डिपेंड है, तो उनका अगर लैंड अगर डिग्रेड होता है तो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। We planned the next steps with Action for Social Advancement. We are implementing this project on the ground. We interacted with the community how best we can provide them our services to address the sustainable livelihood of the rural poorest of the poor. With that idea, we initiated the landscape restoration model. सर्वे के दौरान ये तालाब बनवाने के लिए चर्चा आया, मेड़बंधान के लिए चर्चा आया, लूज बोल्डर चेक डैम के लिए चर्चा आया, और ये पेड़ पौधे लगाने के लिए आया चर्चा। जो काम अभी WRI के माध्यम से इवॉल्व हो रहा है वो बेसिकली जनता को इस प्रकार से मोबिलाइज कर रहे हैं कि वो वहाँ पर लोकल जो उनके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जंगल हैं, चाहे पानी की उपलब्धता है, चाहे ज़मीन है, उससे वो किस तरीके से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट कोलैबोरेशन मॉडल की आप रिसर्च करके कोई डेटा देते हो, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना बताते हो, एक स्टडी होती है। तो हमारा कोलैबोरेशन जब भी हम बात कर रहे हैं तो विन विन सिचुएशन है आने वाले फ्यूचर के लिए। Landscape restoration has a potential to
create economic opportunities, livelihood benefits. It also can address a lot of local priorities, demand and needs, and addresses several environmental challenges. What I feel is that there is room for replication of this model, not only in more number of villages in Sidhi district, but also elsewhere in Madhya Pradesh. So Sidhi is like that pilot for us. I call it our change it stage. Count it, change it, scale it. So we've done the counting, we are now working on the changing it, and once that gets done, we hope that that will be a lesson that can be taken forward at a much bigger scale.